हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, और हम कैसे लॉन्ग टर्म में उनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सर्टेन प्राइस रेंज है जिसके बीच में स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, and there are a lot of sellers here and there are a lot of buyers here who are interested at this price, और यहाँ पे seller है जो interested है इस price पे sell करने के लिए। So basically support resistance ऐसे act करता है whenever prices crosses either of these what do you say levels। जैसे ये level cross करा जब भी price ने, तो what happens, जो हमारे sellers थे, ये जो हमारे sellers थे यहाँ पे, वो अब हमारे बायर बन चुके हैं। प्लस these people who have bought here and here are also right now a buyer। So already मार्केट में दो लोग हैं जो ऑलरेडी बायर बन चुके हैं, और आपको पता है मार्केट में बहुत ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी होते हैं। सो दे ऑल्सो स्टार्ट बाइंग एट दीज लेवल्स। तो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और फिर एक वन साइडेड मूव आता है। सो यही एक कारण है जिसकी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। सो सेम हमारा ऑपोजिट साइड के लिए भी काम करता है। अगर ये एक हमारा एक लेवल है फॉर एग्जांपल, ऐसे देखो आप, प्राइस इस रेंज के बीच में क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन। जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है, सो द गाय हु हैज बीन सेलिंग हियर, उसने यहाँ पे भी सेल कर रखा है, प्लस वो यहाँ पे भी सेल कर रहा है बिकॉज उसको एक एवरेज आउट प्राइस मिल रहा है, एंड देन द प्राइस विल इवेंचुअली फॉल डाउन। और जो यहाँ पे बायर था, ही इज ऑल्सो सेलिंग बिकॉज उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड ही वांट्स टू एग्जिट द ट्रेड, और जो भी उसका परसेप्शन था वो चेंज हो गया। सो दैट्स व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने टाइम से वर्क करता है, और इट्स बेसिक साइकोलॉजिकल लेवल्स एज वेल। तो आज हम देखते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं और हम उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो ये बेसिक साइकोलॉजी थी जो मैंने अभी बताई। स्टार्ट करते हैं रिलायंस से। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है, क्योंकि कोई भी चीज लॉन्गर ड्यूरेशन पे ज्यादा बेटर काम करती है एज कम्पेयर टू शॉर्टर ड्यूरेशन। तो जैसे हम देख सकते हैं रिलायंस का ये चार्ट है, हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं। एक कैंडल एक मंथ को डिनोट करती है, और अगर हम देखें बेसिकली तो हमारा ये जो 2007-8 का हाई था, जो कि हमारा लीमन ब्रदर क्राइसिस का हाई था, एंड देन देयर वाज अ लो, जिसके बाद फिर रिलायंस वाज स्टार्टेड टू ट्रेड बिटवीन दिस रेंज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 8 to 17, इट्स approximately 9 years। 9 years रिलायंस वॉज ट्रेडिंग इन दिस रेंज, और आप देखो प्राइस ऊपर के साइड में 250 और नीचे के साइड में 150 130 के रेंज में एक अच्छा लेवल मेंटेन कर रहा था, और प्राइस वाज कंटिन्यूअसली मेकिंग अ हायर हाई। फ्रॉम हियर इट वाज अ हायर हाई, दिस वाज द लो, then again there was a another higher high here, then higher high, then again it made a higher high, then it again made a higher high, and there was the same resistance level around 240 270 kind of a range, and then price suddenly took off when in 2017, May के around 290 rupees में the stock broken out from the level, and then we can see from 2200 rupees to almost 2000 1500 1600 kind of a high. So almost stock has given a 7 to 8x return in the duration of almost 10 years you can say। आज हम 2026 में हैं, तो उस हिसाब से देखोगे तो आप almost 10 years में 5 to 6x return is decent considering it's a large cap and it's a mammoth company। So that's how trading support and resistance gives you base।
So there are two kind of supports. So one is horizontal, and then there is a trend line supports. So which are not that much reliable, but you can consider them as a strong support and strong resistance. So आप देख सकते हो जैसे it's a following a channel. Okay. Then coming to the next example, Hindustan Unilever. So this is also a company everyone knows, everyone follows. So coming back to one more example, हम सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे. इसमें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको सब जानते हैं उसकी बात करें. इट्स एमएनसी. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनी टिल 2020. उसके बाद स्टॉप गिविंग द रिटर्न. आप देख सकते हो कि एक रेंज थी हमारी. दिस वाज अ पोस्ट लिबरलाइजेशन रैली जब इंडिया ने फॉरेन कंपनीज को एंट्री दी थी आफ्टर मनमोहन सिंह. एंड देन उसके बाद वी कैन सी है कि एक कंपनी ने एक फिनोमिनल रिटर्न देने के बाद एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी में फॉल डाउन कर लिया था. तो ऑलमोस्ट स्टॉक 33 से 150, इट्स अ 5x काइंड ऑफ अ रिटर्न देने के बाद स्टॉक वाज ऑलमोस्ट साइडवेज फॉर व्हाट यू कैन से 8 8 to 9 years का साइडवेज ट्रेंड था स्टॉक का, जिसमें स्टॉक ने ऑलमोस्ट नो रिटर्न दिए फॉर 9 years. And that's how you trade long term breakout. And then it got retested, and then the price started moving higher. And there around 2010-2009 जो हमारा लीमन का क्राइसिस था उसमें भी स्टॉक ने इतना कुछ खराब परफॉर्म नहीं किया. इट वाज साइडवेज काइंड ऑफ अ रिटर्न बिकॉज कुछ मूवमेंट थी नहीं और इकोनॉमी में सिर्फ खराब न्यूज थी. तो वैसा करके स्टॉक हैवंट परफॉर्म एनी वेल. एंड आफ्टर दैट आप देख लो हाउ दीज लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क. तो ऑलमोस्ट हमारा 170 का स्टॉक इस बुल रन के एंड होते होते ऑलमोस्ट 1700 का हो गया. इट्स अगेन बिकेम अ 10x इन नेक्स्ट 15 years. 15 years में 10x is okay, okay kind of a return. It's a decent return for people who invest in fixed income kind of securities. और इक्विटी वालों के लिए भी it's a decent when considering it's a blue chip and it's doing phenomenally well. और आज की डेट में काफी बड़ा ब्रांड है. सो फ्रॉम 170 तो ऑलमोस्ट 2600 का लेवल, एंड दैट हाई गॉट टच्ड इन समवेयर 2020 and 2021 जहाँ पे इन्फ्लेशन वाज अबाउट टू गेट हिट. काफी सारे स्टार्टअप ब्रांड्स आ गए थे एंड देन पीपल स्टार्टेड टू शिफ्ट इनटू हेल्दियर फूड्स. एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोसेस फूड्स हैं या जो वो इमेज है हाउस होल्ड वाली, उसका कंजम्पशन थीम इतना नहीं ग्रो कर रहा है. बट स्टिल कंपनी लुक्स गुड. लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी इज स्टिल पॉजिटिव. So that's how you play long-term trends. Now coming to everyone's favorite stock, CDSL. So CDSL again was the same thing. Got listed it somewhere in late 2017 जब small cap और mid cap में selling आ रखी थी and only the large caps were the winner. So मैं आपको बता रहा था कि basically जो हमारे stocks होते हैं जो sideways तो दो तरह के बेसिकली हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं. एक हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं और एक हमारे वर्टिकल लेवल्स होते हैं. तो ये हमारे वर्टिकल लेवल्स आर मोर रिलायबल देन हॉरिजॉन्टल लेवल्स बिकॉज कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं ट्रेंड. एंड इन अ साइडवेज मार्केट हॉरिजॉन्टल लेवल वर्क्स, एंड देन इन अ ट्रेंडिंग मार्केट वर्टिकल लेवल्स और वो कैन से ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ सेटअप वर्क्स. सो हम यहाँ पे आ जाते हैं 2017 में CDSL गॉट लिस्टेड. कंपनी अगेन वाज अ डुओपोली. CDSL एंड SGL दो डिपॉजिटरी हैं इंडिया में. सो दिस वाज द थीम. कंपनी वाज अराउंड अ मार्केट कैप ऑफ 1000 से 1500 करोड़ के आसपास, एंड देन इट गॉट डिग्रेडिंग. 170 रुपए पे लिस्ट हुआ, came all the way to 70, 80, 90 levels.
And then this was the level जब IPO प्राइस पे जिस पे लिस्ट हुआ, हाई इट गॉट ब्रेक, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करा इसने अराउंड 200 के लेवल्स पे, एंड देन यू कैन सी द रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड 200 के लेवल से इट्स ऑल द वे अप टू 2000 levels, और जस्ट इट इज जस्ट हैपेंड इन द मैटर ऑफ 5 years। 2024 में हाई लगा था तो आप देख सकते हो 4 से 5 साल में the stock is almost a 10x kind of a thing. So this is the benefit when you see a good company at a good profitability, and it's in a what you say monopolistic market जहाँ पे competition नहीं है, जहाँ पे इतना other player का dominance नहीं है, and then when they give breakout they give like this. So this was the first leg. So first leg में it covered from 100 rupees to all the way 750, and then it got sideways. Sideways में हमारे लेवल से again a range from 750 to 500 का low, and then it again given a chance to enter, and then from 700 it went all the way up to 2000। तो यहाँ पे भी एक 3x हुआ। So people who have entered late still made money in CDSL। So this was one more example of how support and resistance work, and still a decent company right now. Support is somewhere around 1000 rupees, 200-day moving average is around there only. So looks good as a decent, reasonably good market. Coming to our fourth example, BSC, everyone's favorite stock. Coming to the monthly chart, same story, same. You just have to pick trending companies with good fundamentals and have to check when they are breaking their downward spiral. So this was a horizontal trend line, and this was a vertical trend line which it broke. So on the COVID low, it has broken. So it got listed around 100 rupees, and then went all the way up to 30 rupees. And then we can see as the horizontal level break of 100 with good decent volume. You can see the volume levels here. Lot of participation in this. So a lot of people got interested in BSC because it was again the same story. It was a monopolistic company. Only NSE is there, and NSE is not yet listed. So, so from 100 rupees in 2021, stock has went all the way up to 3000 and still at lifetime high. So almost what you say a 20-30x kind of a return it has given in next last 4.5 years. So this is kind of a businesses you can invest in for long term. Coming to the weekly part, so a lot of people have entered here, thought the might stock has topped out here. Stock went all the way up to 200-day moving average, tested it and went back to its previous trend. Because these are मतलब ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, इट्स अ सिक्लिकल ट्रेंड, यू कैन नॉट स्टॉप अ कंपनी जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, एंड सो इट हैज गिवन अ वेरी decent return to the investors. So again, given a chance to enter here, so people who are aware and who are trading might have entered at 250 rupees, and then it has given a decent run till 800. Then again, if you have been chasing support and resistance only, it's breakout, retested it, and again it went back, and that's how it is trading. And still at 1.5 lakh crore market cap, it still looks cheap to many people in the market. Analyst starts giving a still buy recommendation. Still, it's just in a sideways trajectory. It might break 3000 level in the next bull run, but right now the stock is resting because almost 20-30x stock people are sitting at a hefty profit. No one wants to sell. That is the reason stock is sideways. Then this is a very good example. Then coming of one more.
company, Masdog Shipbuilding. Come to the monthly chart. So that's how you can make money by simple using simple things in the market. अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा आपने वीकली पे क्या चल रहा है मंथली पे क्या चल रहा है एंड देन you just wait for the time whenever the range breaks. You check the fundamentals and you enter and you make money and you sit there. That's it. So it was a normal shipbuilding company, basically Masdog Shipbuilding. Nothing was happening. 2021 IPO, everything was looking normal. People are accumulating. You can see these huge volumes, and the price movement with the volume. So very good volume based move which you can see here, and then it, it's break out from that range. So basically it's 150 around, it breaks out, and then next range it makes at 450. The bottom is here somewhere around 330. So how I make these levels? So for example, whenever a trend breaks, मतलब कोई एक स्टॉक है वो बहुत ही फोर्सफुली इट्स मूविंग अप एंड देन सडनली इट ब्रेक्स, इट्स मेक अ डोजी एंड देन रिवर्सल हैपेंस. जो भी फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं इट क्रॉसेस देम डाउन, और काफी रेड कैंडल्स के साथ विद फुल ब्रूटल फोर्स. सो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में 2022 में. बेसिकली कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई थी पर कंपनीज के प्राइसेस आ गए थे. सो पीपल वर वेटिंग फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी. सो बेसिकली इस एरिया में लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स वर वेटिंग कि अब कंपनी के प्रॉफिट्स भी आ जाएं. जो प्राइस आ गया है वो तो फेयरली वैल्यूड है ही है. एंड देन व्हाट हैपेंड, द प्राइसेस आल्सो केम, द प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो केम, एंड देन स्टॉक्स अगेन ब्रेक आउट. और जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो डायनामिक्स था इंडिया का, वो भी चेंज ही हो रहा था साथ ही साथ. There was also a fundamental news and shift in the stock. So I bought it here personally, and then we traded it to 1000 level and then we booked it. And then again stock make these kind of profit booking candles where you can assume कि हाँ अभी कुछ time के लिए trend is pause, and then it has made this range again 1100 से 800 850 की एक रेंज बनाई स्टॉक ने, उसके बीच में ट्रेड करता रहा. And then after some time again, when fundamental and earning started to come again, then stock again broke out. 1200 से again 2000. So if you see, this is a very simple strategy. It's nothing. It's just the support and resistance and fundamental which you are keeping track of. तो अगर आप monthly level पे देखोगे तो same thing. It's just nothing. It's just pullback, uptrend, a pullback, uptrend, a pullback, and an uptrend. Here it tried to break out on the monthly level, but fundamentals were not supporting, and then war का news आ गया, and then earnings were also degrading. So ऐसे करके stock has already performed. It's from a small cap company, it's already a mid cap to a slightly larger mid cap company. So एक decent point के बाद mid cap company भी space पे grow नहीं कर पाती as a small cap company can. So this is also one of the example, and there are a lot more examples which we can discuss. For example, one more example I would like to share, Eicher Motors, which is one of the India's best multi-bagger from 2000 to 2000 days. So it is a company which was into what you say truck manufacturing. So एक passenger vehicle company थी, basically trucks बनाते थे, and at that time it was not much of a deal. India was a service based economy, तो बस import exports के लिए truck use होते थे, but still it was a good theme. Then in 2002 the stock broke out in the what you say this bull run.
ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करा उसने, जो 2002 से लेके 2008 का बुल रन था उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन आया नहीं स्टॉक का। एंड देन इट गॉट साइडवेज, तो 4 रुपए से स्टॉक हैज ऑलमोस्ट व्हाट यू से 30 रुपए का हो गया, ऑलमोस्ट 4 to 5x। नॉट अ वेरी बिग रिटर्न कंसिडरिंग वो पागलपन जो बुल मार्केट का था, उस हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा रिटर्न नहीं था, बट हाँ स्टॉक डिड पार्टिसिपेट। एंड देन 2009 thing happened, and then in 2010 the stock finally broke out, and with a mad thing it broke out from 35 rupees. It has went all the way up to these levels. Again a doji in the top, and you can see this range area you can see. So यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई, अगेन एक रेंज बनी, सो फ्रॉम ऑल द वे अप टू 33 to 3000, ऑलमोस्ट 100x रिटर्न। अब इस बीच में स्टॉक में डिफरेंस क्या आया जो उसने 100x रिटर्न दिया? द द फाउंडर्स, जो भी फाउंडर का मतलब जो आइशर मोटर के फाउंडर है उनका जो बेटा था, he entered into the business division and he studied the bike market, and then he was transforming and reviving the Royal Enfield division. So basically ट्रक के डिवीजन से ज्यादा बिजनेस हम उनके बाइक के डिवीजन को मिलने लग गया, एंड 2012 में द गाय स्टार्टेड, 2012 तेरा आई गेस, एंड देन फ्रॉम ऑल द वे देयर टू आज रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर इन सेल्स, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। सो एक रेंज में अगेन 1400 से 3000 की रेंज, एक डिसेंट रेंज, and then the stock has again broke out from that range. So from 3000 levels, it's all the way up to 8000. So the stock has given a phenomenal return, and if you would have uh, traded it based on just support and resistance and some fundamentals, you would have made phenomenal money. So that's how long-term support and resistance work. And just if you want to add, you can add a horizontal line as well to the stock. So still looks decently good from long-term picture. Still a large cap company, won't able to perform as it has done already. So that should be the objective. So thank you. That's all for the support and resistance video. See you guys in the next video. Thank you.